ओम शांति Om अव्यक्ति परिवार Shanti, Avyakti Parivar, आज है Sparu. स्वच्छता को धारण करो पवित्रता के महत्व को जान महान बनो ब्राह्मण जीवन का Le जियदान don de ही la vie pour les brahmines est la pureté. La आदि pureté est अनादि votre से forme परिपूर्ण originelle है et éternelle. पवित्रता La मानव pureté जीवन के est les विशेष spécialités विशेष de la है naissance spéciale des पवित्र brahmines. संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है पवित्र Les दृष्टि pensées ब्राह्मणों pures की sont la रक्षा है nourriture de पवित्र l'intellect कर्म pour un ब्राह्मण जीवन का brahmine. विशेष धंधा है पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण Les जीवन relations et का les connexions देवता है pures constituent le ब्राह्मण code de जीवन की conduite des महानता brahmines. पवित्रता है La ऐसी pureté, महान et c'est चीज ce qui को fait त्याग la कर grandeur de la नहीं vie करो brahmine. हट À से présent, नहीं vous ne अपनाओ devrez pas avoir à ओम travailler dur pour शांति vous imprégner मोहिनी दीदी d'une spécialité aussi élevée. Vous ne devriez pas avoir à vous forcer pour adopter cette vie. Écoutons maintenant Moïni Didi. ओम शांति। Om Shanti à tous. आज तो सभी ने अपना बहुत अभ्यास किया। Aujourd'hui, tout le monde मैं आपको en fait beaucoup बाबा d'efforts. ने जो शांति के बारे में कहा है उसके बारे में बाबा की मुरली में आप लोगों ने आज सुना। पवित्रता और शांति का बहुत गहरा संबंध है। Vous avez sûrement entendu le murli de Baba ce matin. Il y a une profonde relation entre la pureté et la paix. Baba शांति की शक्ति से rend cette relation claire. Aujourd'hui, Baba a dit, संस्कार मिलन के द्वारा avec le pouvoir de la सर्व pureté, कार्य avec le pouvoir de la करने वाले paix, सदा निर्विघ्न भाव शांति की शक्ति को यूज करके संस्कार मिलन द्वारा tous les efforts sont sans सदा obstacle. निर्विघ्न वही रह सकता है जो फादर सी फादर और फॉलो फादर करता है। बाबा के पास 300 बच्चे थे, राइट? तो बाबा ने कैसे Alors, संभाला? on doit se sentir libre des obstacles. Et c'est la responsabilité de Baba. Et quand on voit le frère, la sœur, il peut y avoir des bouleversements dans l'esprit. Mais si on pense et si on pense de cette manière, il y aura, euh, on doit donc faire en sorte que notre nature ressemble à celle du Père et non celle d'influence des frères et des sœurs, puisque c'est cela qui rend notre statut inébranlable. Les sanskars comme ceux du Père. Alors, quand on a les sanskars du Père, on devient sans souci. Et le pouvoir du silence, quand on est dans le silence, les obstacles fondent हो जाएगा, सर्व कार्य स्वतः ही facilement. संपन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर Et चुप ainsi, tout le service que nous avons à faire sera pris en compte et fait facilement. La paix, c'est notre religion, dit Moïni. और आज के लिए होमवर्क है Bien सत्य sûr, il y a la pureté dans la vie brahmine. Donc, le travail d'aujourd'hui, c'est la vérité. Chit, 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 la vérité et le bonheur.
Quand le chit est vérité, nous sommes heureux. पर एकदम किसी के प्रति भी कोई ऐसी वृत्ति ना हो जिसमें हम किसी Quand के on भी voit quelqu'un, il ne devrait y avoir jamais aucune raison. Nos sanskars, ध्यान देने से हो सकता है कई कहेंगे कि तो कैसे हो ध्यान तो जाता है राइट पर एक ऐसी स्थिति certains peuvent बनानी dire que lorsque notre attention किसी के va संस्कार हमारे चित्त aux obstacles, on jugera, mais on doit rendre notre niveau stable. Et pour rester stable, on doit avoir des sanskars qui ressemblent à ceux de Baba et non pas à ceux de ceux qui nous entourent. On essaie de ne pas aller vers quelque chose qui n'est pas bien pour nous. Et de la même manière, les sanskars होंगे उसको आगे पीछे तो हम क्यों je उठाएंगे suis désolée. On doit travailler sur nos propres sanskars puisque nous avons notre rôle à jouer. Si on voit les sanskars des autres, on n'a pas à travailler sur les sanskars des autres. Et dès le début, Dadi nous disait, pourquoi prenez-vous le sanskar de l'autre? Parce que parfois, on ne doit pas prendre les sanskars des autres dans notre intellect. On doit en demeurer, en rester détaché puisqu'ils ne nous appartiennent pas. Il ne doit y avoir aucune souffrance ou tristesse ou peine de cet ordre. On doit rester dans le bonheur. On doit rester dans ce bonheur illimité. Et c'est ainsi que nous sommes détachés de toute situation et circonstances. Les gourous gardent toujours le but de la vérité. Et j'ai acquis, on doit acquérir cet état d'esprit que nous sommes heureux. Et quand nous sommes heureux, et nous avons reçu tout ce dont on a besoin de Baba, donc il n'y a pas de raison d'avoir d'autres désirs. Donc on doit être détaché et on doit rester dans la vérité de Dieu qui est la vérité. Je pensais aux apprentissages, aux enseignements de Baba, et rien d'autre ne devrait être dans notre intellect à part les enseignements de Baba. Et c'est comme cela, et cette pensée de ce que Baba nous a dit aujourd'hui, quand nous marchons, on doit toujours être dans le souvenir de Baba, et c'est ce qui va nous arriver, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Baba nous enseigne, Baba nous enseigne la vérité et restons dans ce bonheur illimité. Om Shanti. शिव भगवान वाच्य सत चित्त आनंद Le Père parle. सत चित्त आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है L'âme suprême peut être appelée la vérité, l'être vivant et l'incarnation de félicité. Les âmes aussi sont la vérité. Les âmes, des êtres vivants, tout comme la louange du Père est océan de connaissance et océan de paix, vous êtes aussi les incarnations de la vérité, les êtres vivants et les incarnations de la félicité. Om Shanti.